On this significant occasion of International Human Rights Day, we gather not merely as participants, but as custodians of justice, seeking to unveil the shadows cast by heinous crime of enforced disappearances. Today, as we delve into the background of this profound issue, let me first understand the broader context surrounding International Human Rights Day and the ominous specter of enforced disappearances. As we reflect on the broader context of enforced disappearances, we cannot overlook the profound suffering and anguish endured by Baloch mothers and sisters. The families of forcibly disappeared Baloch individuals bear the brunt of this atrocity, as their beloved ones have been taken by the state, leaving behind a void that cannot be filled. The emotional toll on these families is immeasurable, and the uncertainty surrounding the fate of their loved ones casts a perpetual shadow of sorrow. The tears of a mother and the cries of a sister echo the silent pain of a nation robbed of its loved ones. Today, we stand not only as advocates for justice, but as empathetic witness to the human cost of enforced disappearances, mass executions, tortures, and fake encounters. It's our duty to amplify the voices of Baloch mothers and sisters, who in their quiet resilience speak volumes about the injustice inflicted upon their families. Before I proceed further, I would like to call Dr. Zair upon the stage. International Human Rights Day, a beacon of universal values. International Human Rights Day, observed annually on December 10th, commemorates the day in 1948 when United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. It stands as testament to our collective commitment to upholding the inherent dignity and rights of every individual. As we gather today, we carry the torch of this universal declaration, determined to confront the shadows that compromise the very essence of humanity. So let me first define what are the enforced disappearances. Enforced disappearances as defined by international human rights organizations such as United Nations and Amnesty International, refer to the arrest, detention or abduction of individuals by the state agents or those acting with the consent of the state, followed by a refusal to disclose the fate or whereabouts of these individuals. Such acts not only violate the human right or right to personal liberty, but inflict immeasurable pain on families left in agonizing uncertainty. Let me quote United Nations. According to UN, enforced disappearances are not just crimes against individuals. They are an assault on the collective conscience of humanity. To further shed light on enforced disappearances in Balochistan or the importance of this day as we gather here in front of National Press Club, I would like to call Sair Baloch. Sair.
Today, unlike other days of the year, is a significant day in which Universal Declaration of Human Rights took place. This is the day in which right to liberty, right to life, right to education, freedom from slavery, freedom from torture was declared as a universal human right. The declaration was proclaimed by United Nations General Assembly in Paris on 10th of December 1948 and sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. Today marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. On this special day, everyone from every corner of the world was entitled as human being, regardless of their race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. The United Nations is a body that has taken the responsibility to safeguard the rights of the victims of the violation on 10th December 1948. 73 years ago, the UN General Assembly approved Article 40 and 23 and declared the celebration of Human Rights Day. It was in 1950 that the invitation was officially extended to other states and the organization whose values and aims match the objectives of human rights, Declaration of Human Rights. Bringing harmony and peace into the world by observing and trying to eliminate problems and complaints received from the people who are suppressed and facing the brutalities of violation of human rights. This day is celebrated worldwide to commemorate a proclamation made by the UN in 1948 on December 10. Human Rights Day is celebrated with immense pleasure by those who enjoy the right to life, liberty, and freedom, freedom from tortures and slavery. But those deprived from the very basic right, this day is not a day of celebration. Rather, it's a day to raise voice against human rights violations which are taking place in their regions. As we gather today to celebrate Human Rights Day, let us not be blinded by this celebrity rhetoric. While we recognize the progress made in securing fundamental rights for many, the harsh reality remains that millions across the globe still face daily violations of human rights. This stark dichotomy compels us to acknowledge the critical role that human rights organizations play in safeguarding these fundamental rights for all. Human rights organizations act as vigilant watchdogs, meticulously documenting human rights abuses and exposing the truth of injustice. From remote villages to the corridors of power, their tireless efforts shine a light on violations, holding perpetrators accountable and fueling legal action. These meticulous reports and investigations serve as a powerful weapons against tyranny and oppression, providing crucial evidence and demand and reform. But their role extends far beyond documentation. Human rights organizations are tireless advocates, amplifying the voice of the silenced and the marginalized. Through targeted campaigns, public education programs, relentless lobbying, they ensure that the cries for justice reach the ears of the powerful. They bridge the gap between the voiceless and those in power, ensuring that struggle and the aspirations of the oppressed are not ignored. Furthermore, they offer a lifeline to victims of human rights abuses. They provide legal aid and representation,
navigating complex legal system to seek justice and compensation for harms suffered. This tangible support empowers individuals and communities to rebuild their lives after devastating experiences, offering a glimmer of hope in the face of darkness. Beyond individual assistance, human rights organizations invest in empowering communities. They equip individuals and groups with the knowledge and skills necessary to defend their own rights, fostering a culture of resistance and self-reliance. This grassroots approach, where communities are actively involved in their own liberation, is crucial for creating sustainable change and ensuring long-term impact. However, the path of human rights defenders is not without its challenges. They often operate on limited resources and face constant threat of repression, intimidation, and violence from those seeking to silence their dissent. Yet, their unwavering spirit and commitment to justice remain undeterred. On this Human Rights Day, let us not just celebrate the ideals of human rights, but actively contribute to their realization. Let us stand in solidarity with human rights organizations, amplifying their voices, raising awareness, and holding governments accountable through our actions. By supporting their tireless work through financial contributions, volunteerism, and active participation in their campaigns, we can collectively contribute to build a world where human rights are not celebrated on a single day, but respected and protected for all and for everyone. Let us collectively pledge to fight for a world where justice prevails, dignity is upheld, and every human being can live free from fear and oppression. Let the unwavering commitment of human rights organization inspire us to act, making this Human Rights Day a turning point in our collective pursuit of a world where human rights are not merely aspirations, but a lived reality for all. Thank you. Let me talk about the background of enforced disappearances. The origins of enforced disappearances are deeply rooted in authoritarian regimes, in colonial countries, and conflicts. It is a sinister tactic employed to silence dissent, instill fear, and obliterate opposition. Throughout history, we see the undying echoes of enforced disappearances in regions plagued by political unrest and unchecked power. The shadows of enforced disappearances darken the pages of history, a stain on the conscience of societies that tolerate such grave injustices. So, what is the importance of confronting enforced disappearances? Today's seminar carries profound importance in our shared pursuit of justice. As we shine a light on enforced disappearances, fake encounters, tortures, we symbolically reject the oppressive darkness that shrouds these acts. Our collective commitment to addressing this issue transcends borders, affiliations, and backgrounds, echoing the sentiment of our people. To deny people their human rights is to challenge the very humanity. In coming session, we will unveil the layers of human rights in Balochistan, critique the responses of international organizations, and acknowledge the brave efforts of Baloch Yakjehti Committee. Together, we stand united, unwavering in our dedication to human rights and justice. Justice is not a distant ideal. It is the moral imperative
that binds humanity together. Thank you for your presence and commitment to unveiling the shadows of injustice on this International Human Rights Day. Now I would like to call Saira Baluch, who will share our griefs, our pain during all the times. چونکہ ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم سب واقف ہیں کہ ہماری زمین پر کس طرح کئی سالوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 2009 کے بعد ریاست نے بلوچ کی نسل کشی کے لیے ایک پالیسی اپنائی، کلنگ ڈم پالیسی، جس میں جو سیاسی کارکنان تھے جیسا کہ سنگت ثنا، واجہ غلام محمد یا کہ شہید رسول بخش اور دیگر جو سیاسی کارکنان تھے، انہیں لاپتہ کر کے پھر اس طرح کلنگ ڈم پالیسی کے ذریعے ان کے لاشوں کو ویرانوں میں پھینکا گیا. وہ لاشیں جنہیں بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا. اس طرح کے پالیسیز شاید بلوچ کے جوہد کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے اور جو کارکنان تھے یا بلوچ کے لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی ریاست کی طرف سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیک انکاؤنٹر پالیسی بنائی گئی. جو لاپتہ افراد ہیں، جو کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، ان کو ابھی جو ہے فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا جا رہا ہے. یا کہ ایسے ابھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے علاوہ ہماری زمین پر کئی لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے پہلے یا کئی دن پہلے، سالوں پہلے جن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا تھا، ابھی انہیں فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ ایک واقعہ ہے زیارت کا، جہاں پہ جو ہے 13 لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر کے نام پہ شہید کیا گیا. تو اس کے خلاف ہم نے 2022 میں ایک دھرنا بھی دیا. 50 دن ہم گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے رہے. ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں تھیں، چھوٹے بچے تھے، اور وہاں پہ سیلاب، بلوچستان میں سیلاب ہو رہا تھا بارشوں کی وجہ سے، لیکن ہم پھر بھی سڑکوں پر تھے. 4 دن مسلسل بارش کی وجہ سے جو بوڑھی مائیں ہیں، بچے ہیں، ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اپنے دھرنے کو کنٹینیو کیا. لیکن اس کے بعد جو ہے ہمیں رانا ثناء اللہ آئے، اعظم نذیر تاڑ اور شازی ہماری دیگر حکومتی نمائندے آئے اور ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے. ہمیں 3 مہینے کا وقت دیا گیا، لیکن آج تک یہ فیک انکاؤنٹر بند نہیں ہوا. اس کے بعد نوشکی میں، خزدار میں اور کئی جگہوں پہ آج تک فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں. ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں بالاچ کا کیس، بالاچ کو بھی عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا گیا. تو یہ ایک نئی پالیسی ہے بلوچ کی نسل کشی کرنے کے لیے، بلوچ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 2004 سے ملٹری آپریشن شروع ہوئی. یہ بھی ریاست کی طرف سے ایک پالیسی تھی. ڈیرہ توتک میں یہ آپریشن ہوا، مشکے میں ہوا، ڈیرہ بگٹی میں ہوا اور بولان میں بھی، جہاں پہ جو بلوچ ہیں ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج تک ہم دیکھتے ہیں ڈیرہ بگٹی میں جو آپریشن شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے، جس میں بہت زیادہ بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یا بولان میں کئی روز تک رستوں کو بند کیا جاتا ہے. بلوچستان میں کئی دہائیوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے آج تک پاکستان سے یہ سوال نہیں کیا کہ بلوچستان میں کیوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہم نے یا بلوچوں نے ہر دفعہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، اپنی آواز ان جگہوں تک پہنچانے کی کوشش کی، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہیں اور پاکستان سے آج تک سوال نہیں کر رہے ہیں کہ آیا بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, as we commemorate International Human Rights Day, let us heed the words of Eleanor Roosevelt, who once said, "Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home." Today, we confront the harsh reality that these small places include the very heart of Balochistan, where the rights of ordinary individuals have been trampled upon the humanity. Our shared responsibility begins in those small places of Balochistan, where the suffering of one becomes the suffering of all. Now I would like to call our little Mahazib, who will share our experiences, our pain regarding the enforced disappearances of our uncle. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ سرزمین سے تعلق رکھنے والی میں مہذب بلوچ، جو کہ پچھلے 6 سالوں سے انہی درد کے شکار میں ہے. انفورس ڈس اپیئرنس جو کہ بلوچستان میں کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، جیسے ذاکر مجید، زاہد بلوچ، اس طرح کے اور بھی جو ہے بلوچوں سے یہ انفورس ڈس اپیئرنس اسٹارٹ ہوا. دیکھیں، بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی کارروائی ہے یہ شاید بہت کم ہے، اور ہم بلوچ انہی پر امید کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے انفورس ڈس اپیئرنس تو کوآپریشن کی اگر بات کیا جائے 2011 میں، وہاں آپ نے کیا کیا؟ وہاں کے لوگوں پہ چھاپا مار کے اور ان کو آج تک ان زندانوں میں آپ نے قید کیا ہے، جن کے لواحقین کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے لوگ زندہ ہیں یا ان کی آخری دعا پڑھ لیں. جو بات کیا جائے سی پیک کی، جہاں آپ نے یہ پروجیکٹ بنانے کے بعد جن لوگوں کو آپ نے وہاں سے نکالا ان کے گھروں کو جلا دیا اور وہاں سے راستہ بنا لیا. بلوچستان کے مسئلے ہم جتنے بھی بیان کریں لیکن یہ بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ ان کو بیان کرنے میں دہائیاں لگتے ہیں. پچھلے 2 دہائیوں سے انفورس ڈس اپیئرنس کا مسئلہ یا کہ بلوچستان میں ہوئے ہر ظلم کے خلاف نہ کہ انسانی حقوق نے اپنی جو ہے نہ ہی شرکت ادا کی ان میں، نہ ہی انہوں نے آواز اٹھائی، کیونکہ وہ بلوچ کو جو ہے مجرم سمجھتا ہے.
اس کو بلوچ سے نہیں، اس کو بلوچ کی معدنیت سے مفاد ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ بلوچ کہنا کیا چاہتا ہے، بلوچ کا حقوق کیا ہے. وہ پاکستان سے یہ سوال بھی نہیں کرتا. اور پاکستان خود کہے تو کیا کہے، کیونکہ وہ ایک غلام ہے اور اس کو بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہ غلام ہے اور غلام کو پتہ نہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں. اگر آج ہمارے گھروں کو جلاتے ہو، اگر آج توتک کو آپ نے ویران کر دیا، اگر آج آپ نے ہمارے خزدار کو ویران کر دیا، وہ صرف اور صرف آپ کی ریاست کی ہاتھ ہے اس میں. کیونکہ جب آپ سی پیک سے اپنے لیے راستہ بناتے ہیں، وہاں کے جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں، ان کو بے گھر کر دیتے ہیں، آپ کے دل میں ترس نہیں آتی. انسانی حقوق کا مطلب تو شاید آپ ہمیں بلوچ نہ، آپ ہمیں انسان آپ ہمیں انسان کہہ کے، آپ ہمیں انسان کا نام دے کے ہمارے بلوچستان کے اوپر ایکشن لیا جائے. کیونکہ آج یہ جو مارچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے چل رہا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، اگلی دفعہ شاید یہ مارچ آزادی کے لیے نکلے. کیونکہ غلامی کی زندگی اب بس ہو چکی ہے. ابھی ہمیں غلامی نہیں، ابھی آزادی چاہیے آپ سے. کیونکہ انسان کا کہنا صرف ایک دفعہ ہوتا ہے، اور ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم آپ کو دوسری دفعہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں سرخ جھنڈا لہرا رہا ہوگا اور ہم آزادی کے نعرے لگا رہے ہوں گے. کیونکہ ابھی ہم نے اس طرح کے نوجوان، ہم نے راشد، ہم نے اور بھی جوان قربان کیے. آپ نے میری خاندان کو تباہ کیا، آپ نے مجھے بے بس کا نام دیا، آپ نے میرے گھر کی عورتوں کو شہید کیا، آپ نے مجھے تعلیمی اداروں سے نکال دیا. میں یہ سب منظور کروں گی، لیکن اپنی سرزمین پہ ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر میں چپ رہی میری ضمیر مجھے نالت دے گی، اگر میں کچھ کہوں تو مجھے زندانوں میں مارا جائے گا. میں اب صرف انسانی حقوق سے کہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ بلوچستان کے ہسٹری دیکھیں، آپ ایک دفعہ بلوچستان کے اوپر ایک ایکشن لیں کہ وہاں کیا ہوا ہے. کیونکہ میں آپ کو اس ریاست کے جو ہے اہلکار یا آپ کو پاکستانی ہونے کا میں نہیں کہتی ہوں، میں آپ کو انسانیت کے اوپر کہتی ہوں. اگر آپ مجھے انسان ماریں گے، اگر آپ مجھے مسلمان اس جو ہے نبی کی امت ہی مانیں گے، تو آپ ہمارے بلوچستان کے اوپر ایکشن لیں. کیونکہ اب ہم نہیں کہتے کہ ہم پھر سے غلامی والا زندگی جیے. ہمیں یا ہماری سرزمین فارغ کر کے دے یا ہمارے مسنگ پرسنز ہمیں دے. کیونکہ پہلے جنگ آپ سے کچھ اور لوگ کرتے تھے، جنگ کرنے والے کوئی اور تھے، لیکن آج آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم بھی اپنے ہاتھوں میں بندوق لے کے یہاں سریام گھومیں گے. کیونکہ غلامی کی زندگی سے بس ہو چکی ہے. اب نہیں چاہیے ہمیں یہ غلامی. ہم نے آپ کو ایکسیپٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو مانا تھا کہ ہم اس ملک کے بھائی شہری ہیں، ہمیں ہمارے رائٹ دے دیں. لیکن میں نہیں مانتی، میں اب خود کو پاکستانی نہیں مانتی ہوں، میں خود کو ایک بلوچ مانتی ہوں. کیونکہ آج راشد ہماری عزت کے لیے یا میری عزت کے لیے اپنے دشمن سے ان زندانوں میں لڑ رہا ہے، پھر میں یہاں خود کو کیسے پاکستانی کہوں؟ وہ اپنے جو ہے
औरतों को बाहर निकालने में मजबूर कर रहा है, फिर यहाँ बैठे औरतें खुद को कैसे पाकिस्तानी कहें? क्योंकि हम उनकी इज्जतें थे, उन्होंने हमें बाहर निकाला, अब हम खुद को पाकिस्तानी कहने में भी हमें शर्म आती है। आपने इतने बड़े मसले बनाए, आपने बलूचिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा जंगीनामा नाम दिया आपने, लेकिन अब या तो हमारे लोग होंगे या हमारी मुल्क की आज़ादी होगी, या हमारी आवाज़ सुनी जाएगी या खुद हम अपनी आवाज़ ऊंचा करेंगे। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, human rights organizations play a pivotal role in shedding light on these injustices. Their commitment to the principles enshrined in international agreements serve as a beacon of hope for those who suffer in silence. However, the scope of their impact is only as broad as their awareness. If you are neutral in a situation of injustice, you have chosen the side of oppressor. In the face of injustice, neutrality is an endorsement of oppression. Human rights in Balochistan, as we all are well aware, the background and the history of human rights violation in Balochistan. Since 1947, since many decades, our people and we are suffering from these grave human rights violations. The situation in Balochistan demands our urgent attention. For too long, the Baloch people have endured enforced disappearances, fake encounters, and torture. The staggering figure of over 20,000 cases is a testament of the magnitude of this crisis. As we delve into the depths of these violations, let us reflect on the words of Elie Wiesel, a survivor of the Holocaust. He says that to forget the dead would be akin to killing them a second time. To raise awareness about the enforced disappearances in Balochistan, I would like to share a stage with Nurjan Baloch. Ladies and gentlemen, honored guests, and especially the brave member of victim families gathered here today, thank you for granting me the opportunity to stand before you, humbled and inspired by your resilience in the face of unimaginable adversity. Today, I stand not just as a speaker, but as a follower of soul who understands to some extent and the depth of your pain. My heart aches knowing that we are sharing a common bond, fog in the crucible and forced disappearance. The burden you carry is heavy, yet you deserve with strength that is nothing short of extraordinary. Today I wish to honor your courage, your endurance, and your unwavering spirit. Enforced disappearances violate several human rights, including the rights to recognition as a person before the law, the right to liberty and the security of a person, the right not to be subjected to torture and other ill treatment, the right to life, the right to an effective remedy, and the right to know the truth to an identity, the right to fair trial, the right to an effective remedy of enforced disappearances. Enforced disappearances are also a continuous violation, with violation occurring and continuing until the whereabouts of enforced disappearances have been established. I too have been walking the painful path of uncertainty, searching for answers in the shadow of vanished loved ones. The anguish of not knowing, the sleepless nights haunted by questions. These are silent battles we wage within ourselves. In this shared struggle, we find the connections that transcend words. Our stories, though uniquely painful, we aim at a tapestry of shared humanity.
The absence of our loved ones echoes in the silence, but it is this very silence we discover the power of our voices. It is a voice that refuses to be silenced, that demands justice, and that yearns to be heard. Together, we stand as a witness to the injustice of enforced disappearances. We bear the witness not only to our personal strategies, but to the collective tragedy of a world that permits such acts to persist. Today, I urge you to embrace the strength within your stories. Today, we have the power to shatter the wall of indifference and ignorance. In the context of our shared struggle against enforced disappearance, let us shed light on the legal framework and international commitment that condemns such heinous acts. Pakistan, like many nations, is signatory to various human rights agreements that explicitly denounce the enforced disappearance, mass killings, and other grave violations. The Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and the Political Rights, to which Pakistan is party, strongly affirm the right to life, liberty, and the security of person. These international instrumental stands as a pillar of justice, emphasizing the inherent dignity of every individual, specifically addressing the concern of human rights violations against the Baloch people. It is essential to highlight the alarming instance of enforced disappearance, mass killings, and fake counters perpetrated by the state. Such actions not only contravene international human rights norms but also violate the fabric, justice, and accountability, United Nations Convention against torture and other cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment, ratified by Pakistan, explicitly prohibit torture and ill treatment, condemning practices that cause physical or mental harm. Enforced disappearance and extrajudicial killing are the blatant violation of these principles. For considerable period, Pakistan has been implicated in the grievous act of enforced disappearance. The perpetrators have gone to extremes, even detaining women and children to a pressure on their families. However, it is the last 2 decades that the specter of enforced disappearance has intensified. The victims of these egregious violations include the ordinary Baloch peoples, students, teachers, political activists, and the numerous others. The estimated number of such cases surpasses 20,000, yet only a few cases have found their way into the record of international and the regional human rights organizations. According to Amnesty International, since 2011, the Commission has received complaints in at least 8,154 cases. Regrettably, a significant portion of these cases, numbering 2,274, remain unsolved, as outlined in the Commission monthly reports for September 2021. These alarming statistics underscore the urgency of our collective efforts to address and rectify these gross violations of human rights. As a recently re-elected member of Human Rights Council, Pakistan has the obligation to uphold the highest standard in the promotion and protection of human rights, to not just acknowledge violation but take concrete steps to end impunity for them. Pakistani government has constituted many commissions of inquiry into enforced disappearance with a mandate to trace the whereabouts of illegally enforced disappearance persons and fix responsibility on individual or organization responsible. While it may have tracked down some cases, the whereabouts and the fates of significant proportion of cases remain unknown. Commission has also been criticized for many failures, including adopting the flawed definition of enforced disappearance, using a limited scope of inquiry, providing inadequate protections to victims and the witness, and failing to hold the perpetrators accountable. Human rights organizations, including Amnesty International and Human Rights Watches, have meticulously documented and condemned such violations. According to their reports, the figures of enforced disappearance and human rights abuses in Balochistan are staggering and reflecting a dire situation
They demand urgent attention. As we stand united against these atrocities, let us not forget the significance of international security. The international community attention is powerful tool in holding perpetrators accountable and ensuring justice for the victims. In this specific context of Balochistan, where the Baloch people endured the borrowing consequence of enforced disappearance, mass killings, and fake encounters, it is imperative that global community remains vigilant. The situation demands a collective voice, urging government to hold their commitment and take a meaningful action to address these violations. Our collective journey for justice extends beyond borders, transcendence, nationalities, and ethnicities. By emphasizing the international rights framework and the convention to which Pakistan is bound, we reinforce the universal nature of our cause. Let our voice echo in unison, resonating with principle of human rights and justice that bind us all. May our stories pave the way for justice, illuminate the path of hope, and serve as a testament to the unyielding strength of human spirit. Thank you for allowing me to emphasizing the importance of international commitments in our shared pursuits of justice for the victim of enforced disappearance, particularly within the context of Pakistan and human rights violation faced by Baloch peoples. Thank you. Ladies and gentlemen, in remembering the forgotten, we give life to their silenced voices. As you are all are well aware that we have the families of unfortunately disappeared Baloch individuals, political activists. Since last 12 consecutive days, they have staged a certain token hunger strike camp over here. So, to highlight the grievances of the families, I would like to call the mother of Rashid Hussain Baloch upon the stage. एक्सक्यूज मी, जो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, एक्सक्यूज मी, जो लोग अभी यहाँ पे आए, काइंडली आप हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए। आप काइंडली ज्वाइन करें, सेमिनार चल रहा है, आप काइंडली बैठ जाएं। We request all of you to please join the seminar, please. Now we shall continue our seminar. So we have here the mother of missing or unfortunately disappeared Rashid Hussain Baloch. Now she will share her griefs, the griefs of her family with all of you. Please pay attention. Bismillahirrahmanirrahim. Rashid Hussain Alummaut 2018 दुबई अरब इमारतना एजेंसी राशिद हुसैन गिरफ्तार करे लापता कर शस्तुआ पर पाकिस्तान हवाला करता यार दरवाज़ा रूम करे मुझसे करे इस्लामाबाद बरे वो बस करना तवारे पे बिनों को मफे इंसान हुकूक ना इदारा ते आनंद आपी लेके ना घर में शनदार खिलाफ वर्जी मरे तो बायद नी बरक बरुस्तान हालत औरगना लापता थे और आज़ाद करक बस लाश शादी बंद कर दो उनके दासा बाराश ना लाश तमा दो लाश ना न मतलब पे ख्वाहे पना और बलोच कौमान तेना इदा पी लेके वा तेना ताकत तेना जोड़ मबो बशबो तेना जवान ते हलबो
تینا ملک آزاد کبو ننا دشمن ارے نلوڑا نے خلی نہ وہ ننے خلی باز کمزوری نومبر نہ 20 تاریخ راشد حسین نہ پیشی مس یہ عدالت آئیناٹ پیش مسور تو جج کریں خانہ مچ جذباتی مس نومبر نہ 5 تاریخ راشد حسین نہ کیس تخا پیشی پدا واپس پیشی کینسل کرے دا خدر و بے امامس وہ کنیا خوف کرے خطرہ کرے راشد حسین نہ لما اسلام آباد چیے برے کو انتٹی پیشی یا برے پیش مرے تو مارچ نہ 20 تاریخ وہ پیشی انت کرے دسمبر نہ 5 تاریخ نہ پیشی کینسل کرے مارچ نہ 20 تاریخ چارے کہ دا دشمن دا خدر و دشمن صفق وہ دو کمزور و دشمن سے اگر کہ نم بلو چھنو بش مریں تینا طاقت تینا جوڑ مریں ہنو بش مسرورے نیادی نری نہ طول پبو تینا چھناتے حلبو تینا ملک آزاد کبو تینا حق حلبو غلام نہ غلامی قبول کب پبو بسی تینا نوجوانا ماتے دعا کے و شکریہ ادا کے و آخر دا سنہ ہنہ دے کہ نن اپیل کریں نہ سے بیزار مسوم بیزاریاں پر بزاس تینا طاقت تینا جوڑ مبو تینا ہر گران انتی کبو She was the mother of enforcedly disappeared Rashid Hussain Baloch. Since his enforced disappearance, she has been struggling from city to city, from place to place, from press club to press club for his safe recovery. To further highlight the grievances of families on this Human Rights Day, I would like to call the mother of Janzeb Baloch. ہمارا دل نہیں چاہتا بات کرنے کے لیے مگر ہم کو مجبور کیا ہے ہم کس کے ساتھ بات کریں یہ 8 سال سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جانزیب محمد سنی کا میں ماں ہوں اس کو 3 مئی 8 سال سے اس کو لاپتہ کیا ہے اس کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے بس ابھی خدا کے لیے ہم کو بھی لاپتہ کرو اور جانزیب محمد اسی کا یہ بیٹی کو بھی لاپتہ کرو جانزیب کے ساتھ یہ ہمارا حکومت بہرا ہے گنگا ہے آنکھ نہیں ہے اس کو وہ نہیں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے ہم 8 سال سے روڈوں پر بیٹھ کے بیمار ہو گیا ابھی بس ہم کو بھی لاپتہ کرو اس معصومہ کو بھی لاپتہ کرو ہمارا گھر سارا لاپتہ ہے اور کیا چاہتے کس سے جائے ہمارا بلوچ کہ ہم کو کہتا ہے چھوڑو یہ فچر دیکھنے کے لیے آیا ادھر سرفراز کا فچر دیکھنے کے لیے وہ ہمارا نہیں سنتا ہے اور کون سنے گا ہمارا کوئی نہیں اللہ ہمارا سنے بس اور کوئی بات نہیں ہے ہم نے بات کیا 8 سال سے بات کر رہے سننے والا کوئی نہیں بس ابھی خدا رام کو بھی لاپتہ کرو جانزیب کا بیٹی معصومہ کو بھی لاپتہ کرو اور تمہارا ساتھ تم کو اور طاقت نہیں ہے تم سودا ہو گیا ہے بکٹی کے نام سے ڈوب مرو اکبر بکٹی تم کو اچھا نہیں لگتا ہے بکٹی وہ اکبر بکٹی کا ساتھ زیب دیتا تھا وہ اپنے آپ کو قربان کیا تم حکومت کا چمچہ ہے بے غیرت بڑوا تم کو انسان کام کہتا ہے تم وہ جانور ہے جس کا نام لے 40 دن تک روٹی اور نماز آرام میں تم وہ جانور ہو چمچہ بس ہم بہت بات نہیں کر سکتا ہے بس بہت بات کیا 8 سال سے کیا کوئی سننے والا نہیں ہے She was the mother of unfortunately disappeared Janzeb Baloch. As she said that since 8 years she has been struggling
art for the safe recovery of his beloved son. Without his son, she has lost her life, her happiness, her family. So we have another family of unfortunately disappeared Baloch, Saeed Ahmed, who has been unfortunately disappeared by the state. Since then, his mother has been struggling for her safe recovery, but yet we see not any hope. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidamanamout Kanamare 11 साल पाकिस्तान ना खुफिया एजेंसी लापता करेंगे हर दरवाज़ा गायनानुन हर दरवाज़े टके फिन उनते ना चुनाती की ना चुनाती उनकी आवाज़ जोड़ में वो ना चुनाती मोना था वो ना चुनाती की 10 ना अपील की ने इंसानी हुकूक नादा रगातिया नना चुनाती की ऐसे आवाज़ जुड़ मरी नना चुनाती मोनातिर नना चुनाती बाज़े आप के रख नंते ना चुनाती की बाज़ तकलीफ़ आते थी नागा वो जिंदान आते थी बंदो तो ननम ते ना चुनाती के अंदर जिंदान ते थी बंदो नना खशीक बंदो नना ज़िंदगी बंदे दा नना चुनाती की तकलीफ़ आते थी उनते ना चुनाती की बाज़ अज़ाब थी नना चुनाती बाज़े आप कबूं नने समझी फक मन खैरना मुल्क ना शहरी समझी फक नने मुसलमान समझी फक अंदुम के इज़राइल फ़लस्तीन नज़िया जुल्म करेंगे दा पाकिस्तान ननाज़िया अंदुम जुल्म करेंगे नने तेना चुना थे कि बाज़ इंतज़ार हटी उन तेना चुना था बाज़ तकलीफ़ हटी उन तेना चुना थे कि अगर मौत हम करें इंतज़ार बाज़ को बेने इंतज़ार करें बाज़ तेना चुनाती की तकलीफ़ आती थी उन नना चुनाती मोन आती न चुनाता आवाज़ जोड़ मारे न तेना बलोची लुमतियान अपील के ने इंसानी हुकूक ना दारगा थे अपील के ने नना करे आवाज़ जोड़ मारे नना चुनाती बाज़े आप के रख Criticizing international human rights organization, a call for accountability. While we acknowledge the crucial role played by international human rights organization, we must also scrutinize their responses to the plight of Baloch people. The negligence of widespread human rights violation in Balochistan remains a point of contention. In the words of Martin King Luther, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. It's incumbent upon us to question the challenge and lapse in addressing these grave injustices. Silence in the face of injustice implies the torment of the oppressed. Now, I would like to call our distinguished speaker, Mr. Afrasiab Katak, who is a politician and a political analyst, a senior member of National Democratic Movement. He has formerly served as the chairperson of Human Rights Commission of Pakistan, a former member of Senate of Pakistan. काबिल इज़्ज़त बलोच माओ बहनों बेटियों और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे मौका दिया कि मैं यहां आपके साथ इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पे चंद मुख्तसर गुजारिशात पेश करूं। 75 साल पहले आज के दिन इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर जनरल असम्बली ने मंजूर किया था, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली मंजूर किया था, इसलिए कि 20वीं सदी में दो बड़ी जंगें हुई, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, और
दुनिया इस नतीजे पे पहुंच गई कि ये जंगें इसलिए हुई हैं कि इंसानी हकूक़ लोगों को मैसर नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर आया जो पहला मंशूर था इंसानी हकूक़ का। उसके बाद ये जो आज के दिन हम मनाते हैं 75 साल पहले, ये इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर आया। इसमें ये कहा गया कि हर इंसान, चाहे वो जो ज़ुबान बोलता हो, जो मज़हब मानता हो, जो उसका समाजी मर्तबा हो, अगर वो इंसान है तो उसके ये हकूक़ है और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये इसकी एक तफसील आ गई। उसके बाद फिर पूरा और कवानीन आ गए इंसानी हकूक़ के। अब दुनिया में एक पूरा निज़ाम है इंसानी हकूक़ का। जंगों के लिए भी यानी कानून बने हैं, जेनेवा कन्वेंशन जिसे कहते हैं, जंग में भी मसलन ख़वातीन को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, या जिन लोगों के पास असला नहीं है उन पे फायर नहीं होगा। तो ये चीज़ें दुनिया में बन गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से रियासतों ने उस पर अमल पूरी तरह नहीं किया है। और ख़ासकर जब हम अपने यहाँ देखते हैं तो हमारे बुरे हालात हैं। बुरे हालात इसलिए हैं कि यहाँ पे जो निज़ाम है, हमारा सियासी निज़ाम है, रियासती निज़ाम है, वो जमहूरी नहीं है। नाम के लिए जमहूरियत है, बहुत जमहूरियत की बात बहुत होती है, दिन रात जमहूरियत, लेकिन अमलन जमहूरियत नहीं है। और ख़ुसूसन यहाँ पे फिर जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं, ये महकूम कौमें बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, सराइकी हैं, ये ख़ासकर बहुत यानी हकूक़ से महरूम हैं। फिर तबक़ात हैं जो मज़दूर है, किसान है, हारी है, वो भी हकूक़ से महरूम है। और इसमें हमने देखा है कि ख़ासकर जब आज हम चूँकि यहाँ कैंप में बैठे हुए हैं, जो हमारे बलोच बहनें, माएँ, बेटियाँ और हमारे दोस्त बलोच नौजवान भी हैं यहाँ हैं, तो मेरी गुजारिश है कि बलोचों के साथ बहुत ज़्यादती होती रही है। 1948 में वहाँ पहला फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था। यानी अब देखें ना, आप मुल्क बना रहे थे तो आपने अगर लोगों को शामिल करना था इसमें, तो वो तो उनकी मर्ज़ी से होना चाहिए था। यानी ज़बरदस्ती से तो मुल्क नहीं बनते ना। लेकिन उस वक्त आपने ऑपरेशन से शुरू किया और उसके बाद फिर अयूब खान के ज़माने में ऑपरेशन हुआ 1960 की दहाई में। फिर 1973 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, एक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर ये अभी जो जनरल मुशर्रफ का 2006 से एक ऑपरेशन शुरू हुआ, जो अब देखें ना 17 साल से एक फ़ौजी ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। 17 साल से। दुनिया में ऐसे नहीं होता जी, ये तो सियासी मसले हैं, इसका सियासी हल होता है। इसका ये हल नहीं होता कि आप फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखें और लोगों को इस तरह से बनाएं। मुझे याद है मैं नेशनल अवामी पार्टी में था। मैं 1968 में सियासत में आया जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी, मैं उसमें सियासत में आया। तो हम नेशनल अवामी पार्टी में थे, हमारे साथ हबीब जालिब होते थे, उर्दू के बड़े शायर थे और नेशनल अवामी पार्टी के मेंबर थे। जेलों में भी हम इकट्ठे रहे। हबीब जालिब साहब ने उस वक्त कहा था, ये भुट्टो साहब के ज़माने में जो फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ बलूचिस्तान में, तो उसने कहा कि वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। तो ये उसने उस वक्त एतराज़ किया कि भाई ये कैसी आप मोहब्बत सिखा रहे हैं। और ये बंगाल ताज़ा अलहदा हुआ था, बांग्लादेश बना था। तो उस वक्त हबीब जालिब ने कहा था कि यकीन गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजर खो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा हूँ से दो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो ये लोगों ने बहुत समझाया है, लेकिन आज तक इनको समझ नहीं आई है बदकिस्मती से। तो आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने का सबब क्या है? ये जो बलोच माएँ बहनें यहाँ आई हैं और ये बलोच फैमिलीज़ यहाँ आई हैं, ये क्यों आई हैं? इसलिए कि इनके बेटों को, इनके भाइयों को, इनके बापों को उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? इसलिए उठाया गया कि रियासत जो है वो, ये रियासत क्या कहेंगी, आजकल रियासत की तारीफ ही अजीब व गरीब हो गई है। यहाँ सिर्फ फ़ौज को लोग रियासत कहते हैं। रियासत है मुकन्नना, रियासत है इंतज़ामिया, रियासत है अदलिया, ये 3 रियासत की ब्रांचेस है। तो लेकिन यहाँ पर रियासत का नाम सिर्फ एक महकमे का रख दिया गया। बहरहाल वो कहते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो हैं ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, फलां है। भाई अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है, आप उसको पकड़ लें, गिरफ़्तार कर लें, उसको अदालत में ले आएँ। लेकिन जब आप बग़ैर अदालत के लोगों को पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं, यानी याद है अब क्या, ये तो रियासती दहशतगर्दी है, ये तो कोई कानून की बात नहीं है और ये तो किसी ताकत की अलामत नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आपका ये ख्याल है कि आप लोगों को मार के ताकतवर होते हैं? नहीं, ये एक नाकाम रियासत की पॉलिसी है। ये एक नाकाम रियासत का मलबा है जो गिर रहा है बलोचों पे, पख्तूनों पे और
दूसरे लोगों पे। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रियासत को कानून का एहतराम करना चाहिए। रियासत तब रियासत होगी जब वो कानून मानेगी। रियासत क्या है? रियासत ये देखें ना, ये तो किसी की बाप का मुल्क नहीं, ये तो बादशाह तो नहीं है यहाँ। देखें ना, मुगलों की बादशाही भी हमने देखी है, पुराने ज़माने में बहुत से यहाँ पर हुक्मरान गुजरे। ये तो जमहूरिया है, रिपब्लिक। रिपब्लिक के मानी ये हैं कि एक आइन है। आइन क्या है? आइन एक मुआहदा है किन लोगों के दरमियान? जो अवाम हैं, जो जिनके ऊपर हुकूमत होती है, और जो रियासती हुक्मरान हैं, हुक्मरानों और अवाम के दरमियान मुआहदा है। मुआहदा क्या है? मुआहदा ये है कि रियासत अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और अवाम जो हैं वो कानून मानेंगे, आइन मानेंगे। आइन सब मानेंगे, आइन रियासत भी मानेगी, अवाम भी मानेंगे। लेकिन अगर आप आइन नहीं मानते तो फिर कैसी रियासत है? फिर ज़ाहिर कौन इसको रियासत मानेगा? रियासत की तारीफ़ तो ये है कि वो आइन और कानून के मुताबिक हुक्मरानी करेगी। लेकिन अगर आप लोगों को मारेंगे, उनको उठाएंगे, बगैर मुकदमों के गुम करेंगे, उनको मारेंगे, तो ये फिर रियासत नहीं होती। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जबर से कोई मुल्क नहीं चलता। इस्लामी तारीख़ के बड़ा नाम हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, जो खुलफ़ाए राशिदीन में से बड़े चौथे खलीफा, लेकिन बड़े अहम खलीफा थे, उन्होंने फरमाया था कि मुल्क कुफ्र के साथ रह सकते हैं लेकिन जुल्म के साथ नहीं रह सकते। यह हज़रत अली का फरमाना था। जुल्म के साथ मुल्क नहीं रह सकते, कुफ्र के साथ रह सकते। और पाकिस्तान के लिए तो ये समझ में हमें आना चाहिए। या हमने मेरे सामने सन 71 में मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था जब बंगाल क्यों अलहदा हुआ, इसलिए कि उनके साथ जुल्म हुआ। आपने कानून नहीं माना, उन्हें इंतखाबात जीते, आपने कहा कि मैं नहीं मानता और मैं बंदूक के जरिए हुकूमत करूँगा। आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और जुल्म से देखें, हम इस इलाके में रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े फातिहीन गुजरे हैं, हमने लश्कर देखे हैं, हमने बड़े लोग देखे हैं। सिकंदर आज़म यहाँ आया था, चंगेज़ खान आया था, तैमूर यहाँ आया था, बाबर यहाँ आया था, फिरंग अंग्रेज़ यहाँ आया था, हमने ये सब देखे हैं। चंगेज़ खान अपने वक्त का एटम बम था। चंगेज़ खान घरों को आग लगाता था, मर्दों को कत्ल करता था, औरतों को अगवा करता था और मवेशियों को अपने साथ ले जाता था। एटम बम था, लेकिन लोगों को, अफराद को मार सके, कौमों को नहीं मार सके। हम अपनी सरजमीन पे मौजूद हैं, पश्तून मौजूद हैं, बलोच मौजूद हैं, पंजाबी, सिंधी सब मौजूद हैं। इसलिए कि कोई जुल्म से लोगों को मिटा नहीं सकता, कौमों को नहीं मिटा सकता। तो इसलिए ये छोड़ दें और आ जाएँ जमहूरियत की तरफ, आ जाएँ। बलूचिस्तान के मसले का हल सियासी हल है। मुज़ाकरात करें, बलूचों से बात करें, उनके ग्रीवेंसेस का पता चलाएं। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले साल क्वेटा गया था और वहाँ से ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया था, मैं भी उसका मेंबर था। हम कैंपों में गए, हमने बलोच मिसिंग पर्सन्स की फैमिली से बात की, हम यूनिवर्सिटी में गए, हमने स्टूडेंट से बात की। आप जितनी बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स के खिलाफ आजकल कर रहे हैं, और अब फिर यकीन है आपको कि ये बलोच जो है वो नाराज़ नहीं होंगे। आपको कैसे यकीन है कि आप इन बच्चों को उठाएंगे और उनके खिलाफ ऐलान जंग करके उनको उठाएंगे? तो कैसे ये इस मुल्क में रहेंगे? तो मेरी गुजारिश ये, हम ये बात करने आए हैं कि आप इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर पढ़ें। पाकिस्तान ने भी उसको माना है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो UN जनरल असम्बली ने 1948 में मंजूर किया, पाकिस्तान उस पर दस्तखत किए हैं। अगर दस्तखत किए हैं तो आप इस पर अमल करें। और मेरी गुजारिश ये भी है कि जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में एक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में ये लिखा है कि आप इस पर दस्तखत करें और अपने मुल्क में कानून बनाएं। मेरा मुतालबा ये है पाकिस्तान की पार्लियामेंट से और जमहूरी पार्टियों से, सियासी पार्टियों से, कि आप अगवा करने को, ये जबरी अगवा है, जबरी गुमशुदगी है, इसको जुर्म करार दें, इसको क्रिमिनलाइज करें। और ये जुर्म है, हर हिसाब से जुर्म है। और जो लोग इस काम में मुलविस हैं उनको पकड़ें, उनके ऊपर मुकदमे चलाएं। हम तो कहते हैं कि हमारे जो अगवाशुदा लोग हैं इनको अदालतों में लाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगवा करने वाले हैं इनको अदालतों में लाएं, क्यों ये कानून से बालातर हैं। कानून से कोई बालातर नहीं है। मुझे ये भी कहा गया कि मैं इस पर बात करूँ। वाकई जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने भी अपना काम पूरा नहीं किया। देखें ना, इतनी बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में गुमशुदगी हो रही है। पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर लोगों को उठाया गया है। तो जो आलमी हकूक़ की तंजीमें हैं, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हैं, उनको आना चाहिए। देखें ना, उनको अदालत शुमार मरतब करने चाहिए, उनको इन फैमिली से बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी और बाहर की भी, उनको आना चाहिए। देखें ना, यहाँ अभी जो ये आज़म है उसने कहा कि 50 लोग
उठाए गए हैं, 50 लोग गुम हैं, उठाए नहीं गए, उठाए उसका ख्याल एक भी आदमी भी नहीं उठाया गया। कहते हैं 50 आदमी गुम हैं। भाई क्या आप आए, आप यानी आप कहते हैं कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, ऐसे बोलते हैं कि आप स्विट्जरलैंड से आए हैं, आपको ये पता भी नहीं है कि कितने लोग उठाए गए। हज़ारों लोग उठाए गए हैं, पख्तूनख्वा में हज़ारों लोग उठाए गए हैं, इंटरमेंट सेंटर्स हैं, हमें पता है। ये आप क्या बात करते हैं, किससे बात करते हैं? ये तो लोगों के जख्मों पर आप नमक डालते हैं इस तरह की बातें करके। यानी ये ताजुब कहते हैं कि बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म है, बलूचिस्तान से वज़ीर दाखिला है, बलूचिस्तान से फलां है, बलूचिस्तान से सेनेट के चेयरमैन है और चीफ जस्टिस। वो कहाँ है? वो क्यों यहाँ नहीं आते? यहाँ जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं इनके पास नहीं आते, उनको शर्म नहीं आती कि वो ख़ुद को कहते हैं बलूचिस्तान से आए हुए हैं, और बलूचिस्तान के मजलूम लोगों के पास उनके पास आने के लिए टाइम नहीं है, उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दिखावे की चीज़ें हैं। जब ये किसी कौम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उसके कुछ लोगों को बिठा देते हैं ताकि लोगों को धोखा दें, लोगों की आंखों में धूल झांक सके। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग समझ गए हैं। मुझे यकीन है ये आज जो बलूचिस्तान पर जुल्म हुआ है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जुल्म जो है वो दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। वो मजलूमों को भी काटती है लेकिन वो जालिमों को भी काटेगी, इसलिए कि मज़ाहमत होगी। और आप देख रहे हैं मज़ाहमत जन्म ले रही है। आज जो लॉन्ग मार्च बालाच की कत्ल के खिलाफ तुर्बत से जा रहा है कोयटा, इसमें माएँ बहनें हैं। मैं समझता हूँ इस खत्े में या ईरानी ख़वातीन निकली हैं जुल्म के खिलाफ, अफ़गान ख़वातीन निकली हैं तालिबान के जुल्म के खिलाफ, या हमारी बलोच माएँ बहनें जो हैं वो एक तरह से जुल्म के खिलाफ निकली। हमें उन पर फ़ख्र है। मुझे यकीन है कि ये एक तरह से इन्होंने जिस लिहाज से भी किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के आइंदा के लिए, क्योंकि ख़वातीन के बग़ैर कोई कौम नहीं बन सकती, कोई मुल्क नहीं बन सकता। आज कहते हैं बांग्लादेश इक़्तिसादी तौर पर इतनी तरक्की कर रहा है कि वो इंडिया से मुकाबला कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज़ाद बांग्लादेश में उन्होंने मुल्लाओं को सियासत नहीं करने दी, उन्होंने ख़वातीन को शामिल किया है, उन्होंने फ़ौज को, जर्नलों को भी बिठाया है कि आप सियासत में हिस्सा न लें, आप अपना काम करें। और बांग्लादेश जो कल तक इतना पसमानदा इलाका था पाकिस्तान में जब तक था, अब वो इतना तरक्की कर गया है। तो इसकी वजह यह कि उन्होंने निज़ाम बदल दिया है। हमें पाकिस्तान में निज़ाम बदलना चाहिए और ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जो आवाम के हकूक़ का एहतराम करे, आइन का एहतराम करे और कानून का एहतराम करे। इसी से हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी ने नहीं माना आइन को, नहीं माना कानून को, तो फिर हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। Ladies and gentlemen, in the face of such dire circumstances, the Baloch Yakditi Committee's long march against Baloch genocide stands as a resounding protest. Their journey echoes the sentiment of entire Baloch nation. We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentors, never the tormented. Taking a stand against oppression is not a choice. It's a moral imperative, a moral duty upon all of us. Now, to shed light on the struggle of Baloch Yakditi Committee, I would like to call Dr. Zahir Baloch. Ladies and gentlemen, dear students and brave family members and our guest, thank you so much. Today we gather here under the banner of the Baloch Yakditi Committee at the National Press Club in Islamabad. On the eve of Human Rights Day, this seminar, organized in collaboration with the families of Baloch enforced disappearance persons, aims to shine a spotlight on the human rights crisis unfolding in Balochistan, a region fraught with challenges, but one that cannot be ignored any longer. Situated in the heart of country's capital, surrounded by embassies, international media houses, and the headquarters of global organizations, we question the apparent pretense of ignorance that persists in this technological and informational age. Balochistan's struggle demands acknowledgement and urgent action.
In the intricate political landscape of Balochistan, so-called electables strive to secure favor with the powerful generals to ensure their parliamentary seats. However, the Baloch people, resilient in their resistance and movement, have uncovered the true face of these individuals. They have been instrumental in exposing the failure of these so-called electables and holding state institutions accountable for their actions. Our focus today is on a recent incident that has shaken the foundations of justice, an alleged staged car-bombed encounter by the Counter-Terrorism Department of Pakistan. 3 Baloch youths already in custody were tragically killed in what can only be described as a chilling orchestration. The bodies recovered bore the scars of brutality, with bullets in their heads and hands bound by ropes. The tragedy doesn't end there. 4 other Baloch youths who had already disappeared from different regions of Balochistan met a similar fate in a staged encounter near Pasani, Gwadar. One of them was Balach, a daily wage tailor living in Turbat Cage. He was forcibly disappeared by security forces and in front of his mother at their home. After 20 days of his disappearance, he was produced in front of the court by the CTD. The court granted 10 days remand custody to the CTD, but unfortunately, his body, along with the coffin, was handed over to his family. The court, seemingly impotent in the face of the generals, only ordered an FIR against these killings after the families of the victims staged large protests, placing Balach's coffin in the center of Turbat Bazar at Fida Chowk. This incident sparked a long march movement led by Baloch Yagjehti Committee, a political and human rights movement from Turbat Cage to Shal, Quetta, traversing many cities of Balochistan. What is truly remarkable is the participation of Baloch women who despite societal norms have stepped forward in the face of immense oppression and suffering within their families. Their actions speak volumes about the hopelessness felt towards state institutions and diminishing faith in the silent role of international human rights champions. As this long march progresses through different cities, it collects data on affected families of forcibly disappeared persons, revealing the scale of the issue. The human rights violations in Balochistan should be a matter of grave concern for people worldwide. This movement serves as a stark reminder that every facet of Baloch society, journalists, lawyers, intellectuals, teachers, researchers, students, political, social, and human rights activists, and common Baloch people is affected by these violations. Khuzdar, one of the most affected cities in Balochistan, is now known as the city of mass graves. How can one justify these mass killings? In the city, the Long March movement against oppression gains momentum, echoing the organized resistance with the unspoken support of international human rights champions. It is disheartening to observe that people, intentionally or unintentionally, from Punjab support this Baloch genocide, endorsing mass killings and the daily forcible disappearances of our youth. This support extends to the exploitation of Balochistan's resources, transforming into inhumane crimes committed against its people. The question that echoes
through these desolate landscapes is, who can make them accountable? I repeat, who can make them accountable? The oppressed people. The oppressed people, the common people, standing resilient against brutal oppression by the Pakistani state, all the power to bring about change. State institutions have employed tactical disappearances and established individual concentration camps, mirroring the concentration camps for Uyghur people in China. These camps utilize torture and violence to force individuals into adopting a specific way of thinking. Pakistan's various institutions manipulate discourse and build narratives through media houses and propaganda to justify violence against the people of Balochistan. In reality, the Baloch people are victims subjected to violence, killing, and the dumping of their bodies. The common Baloch people are acutely aware of these harsh realities. As they hear daily news of disappeared persons from different areas of Balochistan, witnessing the return of their sons and brothers and coffins, the mighty state machinery may succeed in deceiving the people of Punjab and the world with propaganda films. But the true sons and daughters of Balochistan know the truth and feel the suffering of their people. History has taught us that no power in the world can withstand the consciousness of oppressed people. So it is with the Baloch people. We are witnessing numerous human rights violations in Balochistan, ranging from the oppressive and forceful evacuation of Afghan refugees in Pakistan to the resistance of Pashtun sit-in protest at the Chaman-Afghan border, where they demand their basic rights. In the past 4 days, alongside the Long March movement against the genocidal and oppressive policies of Pakistan, 19 Baloch youths were forcibly disappeared from Gwadar, the city of the so-called mega projects, and the other different areas of Balochistan. Chinese and other companies are coming for mega projects, benefiting from oppressive processes, while we, the people of Balochistan, the Baloch people, are receiving only the lifeless bodies of our daughters and sons. When the generals kill or disappear our Baloch youth, they rejoice, claiming that they have eliminated terrorists. However, the silence of international human rights champions and organizations is compelling people to consider violence as the only means to counter brutality. The suffering is unbearable for the people of Balochistan, and the prevailing consciousness among the common oppressed Baloch people suggests that violence might be the only language left. In world history, oppressed nations have witnessed this. International human rights champions and organizations have a duty to protect every human rights in this world. Yet we ask, why this selective activism? Is it political, geo-strategic, or something else? Your silence is allowing the killing and disappearance of our brothers and sons. As we stand at the crossroads of humanity, let us not forget that the principles that Human Rights Day represents. Let us unite against injustice, violence, and the violation of basic human rights. To the international human rights community, we urge you to break silence, to recognize the duty that binds us all, and to work together to ensure justice, dignity, and freedom for every individual. Thank you. As I would conclude this seminar, a collective call, moving forward with purpose. As we conclude this seminar, let us carry
forward the lessons learned, the stories shared, and the commitment kindled. The fight against enforced disappearances, fake encounters, genocide is not a fleeting cause, but a persistent journey that requires our sustained dedication. Our voices, our cries, our griefs have the power to dispel the shadows of injustice and usher in the light of a more just and a compassionate Balochistan. Our collective call for justice is the resonance of humanity against the ethos of cruelty. In the spirit of a shared humanity and our commitment to the principles of human rights, let us move forward with purpose, determination, and ability to build our future, where enforced disappearances, mass killings, fake encounters are limited to history. Thank you for your unwavering commitment, your compassionate voice, and your resolute stance against the shadows of injustice. May our collective endeavor be a catalyst for lasting change. Thank you, all of you.